Take 7. Action. Hello everyone, this is Neha Agrawal. I'm pursuing BTech in Electronics and Communication Engineering with my home state being West Bengal. Myself Rahul Verma and from Uttar Pradesh and my branch is Electronics and Instrumentation Engineering. I'm Jagnavi and I'm doing my computer science engineering. I'm from Hyderabad, Telangana. Hello, my name is Kivya Chitrakar and I belong to the branch of Mechanical Engineering. I'm from the state of Nagaland, Jammu-Kidima district. My name is Vante Varshit. I'm first year undergraduate student from the Department of Electronics and Instrumentation Engineering. I'm basically from Hyderabad, Telangana. Hello everyone, I am Electronics and Communication Engineering. I pursue Mumbai and I reside in Sohmadre. Something's wrong now. ये स्क्रिप्ट किसने लिखी? तूने? You're fired. Hello, my name is Ahana Pushpa and Pushparaj. मैं झुकेगा नहीं. I am from EIE branch, Electronic and Instrumentation. I am Piyush Verma. I am from Uttar Pradesh. My branch is Electronics and Instrumentation Engineering. मेरा नाम हर्षित कुमार शर्मा है और मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है और मैं बिहार से हूँ. My name is Katipog Raju from Andhra Pradesh. My name is Diana and I am from Dhaka. My name is Sheikh Sameer Rahman. I am from Andhra Pradesh. My name is Pranjal Upadhyay. I am from Electronics and Communication Department and I am from home state Uttarakhand. I am Aditya Jori of Mechanical branch. I live in Varanasi, Uttar Pradesh. My hobbies, they are to play badminton and basketball little times, but most of the time I am obsessed with reading novels. It's okay. मेरी करंटली हॉबीज़ तो सिंगिंग एंड बैडमिंटन है, बट मेरी हॉबीज़ कोई फिक्स नहीं, मतलब हर दिन चेंज हो जाती है, लगभग नॉट हर दिन, मतलब हाँ चेंज हो जाती है. कर मेरे को जानता नहीं है ये. Hobbies. My hobbies are playing cricket, playing volleyball and watching web series. मजा आया. My hobbies are playing chess और खूब सोना. My hobbies include watching movies, playing cricket, etc. Thank you. English intra. My hobbies are I play chess and बाकी hobbies जेई ने मार दी मेरी. बड़ा हरामी हो बेटा. My hobbies are playing guitar, sketching and writing poetry and stories and talking philosophical nonsense. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. కంప్యూటర్స్ ని తెలుగులో ఏమంటారో నాకు లిటరల్ గా తెలీదు. వెల్, సైన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ సాంఘిక శాస్త్రం అండ్ ఇంజనీరింగ్ మీనింగ్ సారీ ఐ డోంట్. అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్తే తెలివితేటలు అంటారు, చెప్పకపోతే పొగరంటారు. మరి నన్ను ఏం చేయమంటారు? ब्रांच इन हिंदी यंत्रिकी एवं उपकरण अभियंत्रिकी. यस. हमारे ब्रांच का हिंदी में नाम है विद्युतीय अनुविद्युतीय विद्युतीय एवं अनुविद्युतीय अभियंता. जो भी है सही है, मुझे नहीं पता. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है. तुमसे ना हो पाएगा. यांत्रिक एवं उपकरणीय अभियांत्रिकी. I actually researched on a lot of job profiles and BTech seemed to be the most secure one, so I went with engineering. ये फंस गया. Why do you choose BTech? Only to enjoy engineering life and hostel life? हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. Why did you choose BTech? देखो, बीटेक चूज़ करने का मेरा सिंपल सा रीज़न यही था क्योंकि मेरे को पहले से पता था कि मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी है. मतलब ये पहले से ही डिसाइडेड था कि इंजीनियरिंग ही करनी है, इसलिए बस बीटेक चूज़ किया है, नथिंग है. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? Well, మీ క్వశ్చన్కి నా దగ్గర వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్. డాడీ లెక్చరర్, అది కూడా నారాయణ కాలేజ్.
just landed on NIT like that. నాకు అర్థం కాలేదు సార్. I have chosen engineering as my career because I have seen that engineers are the mostly sarcastic. So I wanted to be sarcastic. That's why I chose engineering. अबे साले जो माफ करना. ये कोई पूछने वाली बात है? मेरा भैया इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पैसा उड़ाना चाहता हूँ. ఎందుకు ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదండి మనుషులు కొంతమంది. బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు మనుషుల దగ్గర. I don't know. I really don't know. I just. Next, why did you choose BTech or engineering? Simple answer is I love science. क्या बढ़िया था गुरु. I chose BTech because I'm interested in technologies, especially automobiles. पाँच मिनट आगे उठो, ब्रश मुंह में, ऑनलाइन क्लास चालू. ऑनलाइन क्लास तो बहुत कंफर्टेबल है. मैं अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए. मतलब सीरियसली ओपिनियन ऑन ऑनलाइन क्लास क्यों भाई, क्यों? हमारी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिख रही क्या? मतलब आधे टाइम तो हम लोग क्लास को बैकग्राउंड में चलाते हैं. जब सोचते हैं कि चलो क्लास कर लेते हैं, तब या तो हमारा नेटवर्क इशू रहता है या तो टीचर का नेटवर्क इशू रहता है. मतलब ऑनलाइन में क्या ही कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आता है. ऑनलाइन क्लास की फ्रस्ट्रेशन है भाई, उसमें ओपिनियन नहीं देना है. ओपिनियन के कुछ है ही नहीं, कंफर्म है ये चीज़. भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार. What is your opinion on online classes? Online classes have one pro and one con. The pro is that 100 के भी आप मीटिंग में लॉगिन करके अटेंडेंस लग जाता है, एंड द कॉन इज 100 के भी आपका अटेंडेंस लग जाता है. चीटिंग करता है तू. Online classes are short, monotonous, and to be very frank, I would love to attend live lectures. Food expectations are pretty high. I just hope at least 5-star hotel and the range like pena home food and the tasty unte chalu. Expectations from mess food. रोज नया खाना. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मेस फूड. तो फ़िलहाल तो मेरी बस इतनी एक्सपेक्टेशन है कि खाना जो हो ना वो खाने लायक होना चाहिए, क्योंकि मेरा पुराने हॉस्टल में खाने को लेके बहुत गंदा एक्सपीरियंस था. तो यहाँ पे बस यही एक्सपेक्टेशन है कि खाने लायक होना चाहिए, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करना है. मेस के खाने की तरफ देखो ही मत, चुपचाप रोटी उठाओ, जो मिले वो लगाओ और खा लो. मेस फूड कम से कम खाने योग्य तो हो ही, कम से कम ऐसा हो कि खाने के बाद उल्टी तो ना ही आए. कभी कभी मन करेगा नीचे देखने का, पर उसी में तुम्हारी हार है. I know mess food is going to be 180-degree opposite of what I eat at home, so I'm gonna compromise, and it's fine. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. About mess food, anything is okay. Mess is I expect them to serve meat twice every week. Expectations from mess food. Mess food, American, intercontinental, Asian, African and थोड़ा सा रशियन भी होना चाहिए. बट ये सब नहीं हुआ ना, नॉर्मल फूड हो गया ना, फिर भी चलेगा. ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. From mess food. My only expectation from mess food is that it is eatable. Expectation. भाई मेस फूड, वैसे तो मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ पे मैं वेजिटेरियन रहना चाहूँगा कि भाई कब क्या मिल जाए खाने को. भाई अपना तो वेज ठीक है. What will you do with your college Wi-Fi? देखना तो बहुत कुछ है. HD. समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? ये भी, लेकिन मैं वेब सीरीज देखूंगा, गेम ऑफ थ्रोन्स। I'm definitely going to watch a lot of web series with the Wi-Fi. कॉलेज वाईफाई की बात है, स्पीड टेस्ट। ఏదైనా ఒక విషయం సగం వింటారుగా చిరాకు నాకు. कॉलेज वाईफाई तो भाई साहब पहले कॉलेज तो खुल जाए, वाईफाई हाथ में आ जाए, उसके बाद फिर अपने आप पता चल जाएगा क्या करना है। इसे अभी से डिसाइड करके क्यों रखें? पर पुष्पा। With the college Wi-Fi, I should have to take the online courses regarding skills which should be have to develop in engineering and YouTube channels which are the regardance of. वाह क्या सीन है. What will you do first with college Wi-Fi? First thing that I'll do with college Wi-Fi is probably playing PUBG or Valorant. वाईफाई से मूवी देख लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, और क्या कर लेंगे? 2 ही चीज़ें कर लेंगे। For college Wi-Fi, I will use it in purpose of gaming, studying, and just movie series. I read over internet. कोई नहीं। सीनियर बैचमेट्स क्रश, नो। ये किसी का मैसेज है, सॉरी। సీనియర్ క్రష్ ఆర్ మై బ్యాచ్మేట్? వా, ఇంత మంచి క్వశ్చన్. చూడు ఈ ఫేస్ అసలు ఎవరన్నా పడతారా? అట్లీస్ట్ పడ్డారన్నా? सच में ये क्वेश्चन है, सीनियर और बैचमेट क्रश? नहीं मतलब है क्या, जीवनसाथी.com कि मैंने उसको मैसेज किया, मेरा हाई का स्टाइल बहुत अच्छा था, उसका वर्ड फॉन्ट बहुत अच्छा था, तो वो मेरा क्रश बन गया, या फिर मैं उसकी क्रश बन गई? मतलब क्या ऐसे थोड़ी ना पसंद आता है कोई? अभी तक तो किसी का चेहरा भी नहीं देखा है, फ़ोटो भी नहीं देखी है ठीक से किसी की, फिर ऐसे कैसे? आवाज़ भी नहीं पहचानते, इनफैक्ट नाम तक नहीं याद रहता है। अगर सामने से आ भी जाए ना तो नहीं पहचान पाएंगे ये है कौन। ऐसे ही क्रश बन जाए, हद नहीं हो गई। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। सीनियर क्रश नहीं भाई, ये गलती नहीं करना। मेरे अभी सीनियर्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के, तो आई डोंट। Any senior batchmates crush? I haven't seen all of the girls right now, but some are really cute, and I don't think so that if you stalk a... Yeah, I don't have any crushes upon seniors or my batchmates. Seniors here are very supportive and I can't wait to meet them at the campus. Expectations from seniors, expectations तो बहुत हाई है, और ये उम्मीद भी है जो हमको एचडी में डाटा ना मिले वेबसाइट्स पे, वो सीनियर्स हमको उपलब्ध करा दें फ्री में। देखो सीनियर्स एक्सपेक्टेशन तो पहले कुछ नहीं थी, लेकिन अभी मतलब जैसा उनका हेल्पिंग नेचर देखा है, यहाँ पे सारे सीनियर्स बहुत हेल्पिंग नेचर के, तो जैसा उनका हेल्पफुल नेचर देखा है, तो यही एक्सपेक्ट है कि आगे भी इसी तरह से हेल्प करते रहे, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हम। I would like that senior should be very helpful, और कम से कम ऐसे तो हो ही जो हमें छोटा भाई समझे। సీనియర్స్ ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఐ వాజ్ లైక్ ఖతం నా పని, సీనియర్స్ ఉంటే ఫుల్ అసలు ఆడుకుంటారు, ఇది చేస్తారు అది చేస్తారు అని వినడం తప్పితే ఇక్కడికి వచ్చాక ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ లిటరలీ వెరీ గుడ్. సీనియర్స్ ఆర్ వెరీ నైస్ అండ్ హెల్ప్ఫుల్. ఐ రియలీ ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ getting these kind of seniors, you know. Expectations from seniors: friendly, helpful, supportive. మంచోడిని అనుకుంటున్నారేమో, యాక్చువల్లీ నేను చాలా బ్యాడ్ బాయ్ సార్. నోట్ తెరిస్తే నాకు బూతులు ఎక్కువ వస్తాయి. My expectations from seniors are good. I think those who are studied well in their intermediate will placed in NIT Nagaland, so that all seniors are good, and I feel that they will be friendly with us for sharing any information regarding of career development. अरे कहना क्या चाहते हो? Expectations from seniors, the same like roommate. I just expect my seniors to be normal human beings. Like obviously, if I expect that if I give my seniors respect, they are also just
normal, like they don't bully and that kind of stuff. I just expect my seniors to be normal human beings. Expectations from seniors. Seniors are great, but I come from a school where I didn't get a single chance of playing. If I told you my special talent, it won't be special anymore. Well, నా స్పెషల్ టాలెంట్ ఐఎమ్ రూల్ బ్రేకర్ ఆల్వేస్, well most of the times. ఎక్కడైతే యూ సే మీ నో డోంట్ డూ, well stay careful, I'm going to do the same thing wantedly. That's my special talent. स्पेशल टैलेंट वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं हाँ वॉलीबॉल अच्छा खेल लेता हूँ और आई कैन हिट स्मैश एज वेल फ्रॉम फ्रंट लाइन. ये फंस गया. मेरा स्पेशल टैलेंट किसी भी बात का सीधा जवाब ना देना. आप उसको टैलेंट कहो या रूड नेचर कहो या जो कहो, लेकिन यही एक टैलेंट है मेरे पास, और कोई टैलेंट नहीं है. पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं. My special talent is to convince people about my views. What is your special talent? I can do this, this and this. किसी को पता था ये लगने वाला, इधर नहीं पता था, पढ़ लिया था, हाँ पढ़ा था, तो कुछ नहीं, क्या कर सकता हूँ मैं. Oh my God! Wow! I think that just this skill, that we all should have the capacity to understand the other person's perspective. Like if we are understanding and have the capacity to understand the perspective of other person, I think this world can be a much more peaceful place, devoid of any hate. I think everyone should have good listening skills. I think every person has the talent of being a comedian. A stand-up comedian can do many things. अरे कहना क्या चाहते हो? सबके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, तो सबके पास ना खुश रहने की स्किल होनी चाहिए यार, जैसे कि लड़ाई. What skill do you think everyone should have? Everyone का पता नहीं, मेरे पास टाइम ट्रेवल की स्किल होनी चाहिए और टेलीपोर्टेशन की स्किल होनी चाहिए, क्योंकि नागालैंड जाने का टिकट बहुत महंगा है और ट्रेन से इधर से जाने के लिए 3 दिन. Skill do you think everyone should have? Video editing and programming? It's not a basic skill, but it's a basic human value, which is kindness, and I think each and every one of us should practice kindness in our daily lives. The title of my autobiography can be Sneha and the Secrets. వెల్ నా రూమ్ క్లీన్ చేస్తానుకున్న ఓపిక నాకు లేదు, ఇంక మళ్ళీ కూర్చొని ఒక బుక్ రాసే అంత ఓపిక కూడా ఉంటుందా? లైట్ అవన్నీ మేము రాసుకునే టైప్ కాదులే. What would the title of your autobiography be? देखो ये ऐसे बहुत है, अभी तक हाफ भी क्रॉस नहीं किया है शायद, तो I don't know what to give. Like Sachin had his book which was written as 100 Billion Dreams, or maybe that was a movie. I would like to name my autobiography I Am Still Alive. So since my name is Pranjal, so I think my autobiography's title should be Poor Anjal, because Title of your autobiography, I would suggest Free Bird. मेरी ऑटोबायोग्राफी का नाम, तो भाई अभी तक मैंने इतने क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो उससे थोड़ी बहुत तो आप लोगों को मेरी पर्सनालिटी और थिंकिंग पता चल गई होगी, तो वो काम आप लोग कर लो, इतना मेहनत नहीं करना है मैंने. ऑटोबायोग्राफी मैं लिखूंगी भी नहीं, अगर किसी को वो भी मेरे ऊपर लिखना होगा ना तो वो भी लिख देना, मैं बहुत आलसी हूँ. ये वीडियो बना लिया, यही बहुत बड़ी बात है, तो आप लोग सोचो वो सब.